द हेल्थ केयर टुडे का लक्ष्य स्वस्थ भारत है। देश में कैंसर मरीज की संख्या में काफी तेजी आई है, जिसका मुख्य कारण जागरूकता का अभाव है। आइए हम सभी मिलकर इस कैंसर से लड़ें, जन जन में जागरूकता फैलाएं, तभी हम कैंसर से जीत सकते हैं। कैंसर जागरूकता के लिए द हेल्थ केयर टुडे भारत में जन्म लेने वाली यूएस के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ऑन्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर पूर्णिमा उपाध्याय से आप सभी को रूबरू करा रहा है। Good morning. I'm Dr. Purnima Upadhyay. I'm a hematologist and a medical oncologist, and I do specialize in the field of bone marrow transplantation as well as breast oncology. I strongly believe in the concept of reducing the cost of taking care of patients, particularly when it pertains to our oncology and hematology patients. In this respect, I am a strong proponent of cancer prevention and early detection. I am honored and extremely grateful to the Healthcare Today for asking me to talk about this topic, which is extremely close to my heart, and I am very passionate about it. I strongly feel that in order for us to deliver the best health care that is possible in regards to oncology care, we must reduce the per unit cost of the healthcare delivery, which is possible only if we are able to catch the disease early and, if possible, if we can prevent it. In a nutshell, talking about cancer prevention. Cancer prevention is an extremely difficult topic. It is something that we in the United States of America, in this country, we have not been able to master it or even come close to mastering it yet. In order for us to actually result in cancer prevention, we must understand the factors that cause cancer. It's as simple as that, right? So what causes cancer? There are few things that we know as of today to be carcinogens or cancer-inducing agents. One of them, very important, is actually the sun that we live under, and also the radiation that comes from the earth that we live on. These are things that we cannot prevent. Also, for example, if you live in a city such as New Delhi, you live in New Delhi. If you live in Shanghai, you live in Shanghai, and you cannot move from that place to, say, Denmark or somewhere just because there is excessive pollution. Pollution is, unfortunately, has become the part of our life that we live in, and we can blame this person or that person, but doesn't matter really. It's a part of the globalization, it's a part of industrialization of the humanity. So the most important carcinogens, as you see them every day, is the pollution in the air, is the food chemicals that are going in our food supply, and then there are many other things that we are doing to ourselves. Really, I don't want to blame anyone and say that, well, you are doing this to yourself or I'm doing this to myself. It's a part of our life once again. In this very busy life where we are running from, place to place, trying to accomplish so many different things, it is but normal that we will be relying upon those fast foods or the junk foods that we pick up on our way going back home. It's easy. We all are tired. But when we are doing that, I will just say, let's think 1 second, well, is this the right food to eat? More likely than not, your answer will be no, it is not the right food to eat, and hence we probably should go home and make the dal chawal and feed ourselves and our families. That's the best way of reducing chemicals that we talk about in our food supply to some extent, because at least you are getting rid of the added hydrocarbons and other chemicals that we know are carcinogens that are coming from the fast food industry. Okay, now when I talk, why am I so passionate about cancer prevention is because when we talk about cancer prevention, it's not just about cancer prevention.
We also actually are reducing the risk of heart disease, lung disease. We are improving the our exercise tolerance. We are reducing the rates of obesity. We're reducing the need for bariatric procedures. We're reducing the global healthcare cost just by this discussion. So at the end of this talk, if I say there are 5 things I would like for you to know and remember and start doing that from tomorrow. Let's start doing that, which will be, we'll summarize that at the very end, okay? Let me see how well this talk goes on. Okay, next comes, what else is preventable? Now, there are few vaccines that can be given, and these are given in India, in other places in the world, in America here, and they are known to reduce the risk of certain types of cancer. We're talking about cancer, but that's just the preface. We're talking about health in general, okay? So what are those vaccines? Children, when they're born, are supposed to get, very soon after their birth, are supposed to get 3 injections of hepatitis B vaccine. This should be done. Now, I'm talking about these things pertaining to India at this moment because I know in this country, in the US, it is mandatory. So there's no point of discussing this because that's done already, okay? So we're talking about in India. So hepatitis B vaccination is a must. Why? Because hepatitis B infection is endemic in India in a lot of different places, and that as we grow older, there may or may not be further exposures to other liver toxins such as alcohol or medications, but just by itself hepatitis B infection can lead to hepatocellular carcinoma, and that's something that you can prevent by this vaccination. Simple as that. Okay, what else? HPV, the big one, and I am a very big proponent of that. Why am I saying that? Because we know that particularly in India, cervical cancer used to be the #1 cancer found in women and girls and in the reproductive age group, and also was the #1 reason for women dying of cancer. That was the cervical cancer. Okay, now we came to a point where we figured out, well, there's HPV virus, a particular strains of it, couple of different ones, that causes this infection that leads to this cancer. So when we know of an infection such as the human papilloma virus that commonly infects girls and young women, as well as women of advancing reproductive age, and that leads to this deadly cervical cancer. Even though there are methods of detecting this cancer early on by doing the pap smear on a regular basis, however, we always know that prevention is always better than a cure. And why is that? #1, if you do not get the disease, no matter what disease we're talking about, you will keep your body more healthy. You will be able to live and enjoy your life more meaningfully. You'll be able to do things that matter to you, like taking care of your children, having fun, instead of spending your time in my office. And so I believe the prevention is definitely the way to go. And there are few cancers that we can prevent, one of them being the cervical cancer in women. And that's a very important thing because this is a 50% of our population. So if we can prevent a cancer happening in 50% of our population, it will definitely have impact and repercussions and good effect on the rest of the population as well. This brings to a very important topic, a very important concept of HPV vaccination for men for head and neck cancer. Now we're talking about a slightly controversial topic.
this is not entirely the way it is in all parts of the world. I understand that, and it is up to your geographic and your doctor and the discussion that you have with your physician as far as how you want to go about doing this. But definitely the same virus, the HPV, is known to cause the head and neck cancer, particularly in the young men nowadays. It is a problem. So can we vaccinate our young boys as well, our boys and young men as well? Yes, definitely. I'm a big proponent of that, and it is almost a standard of care in this country, and therefore both my son and my daughter did get vaccinated before they entered the 6th grade with the HPV vaccine, anti-HPV vaccine. Okay, so that's about cervical cancer, that's about head and neck cancer as it pertains to the HPV related infections. However, now let's talk about a very, very, very important topic, which I don't know if we are even be able to cover it even remotely in this discussion that we're having today, which is tobacco, the huge carcinogen. Now, as you know, tobacco comes from a plant. It's found in nature. Actually, Virginia, where I am right now in the suburbs of Washington DC, is known to have the largest plantations of tobacco, and it was something that Europeans had initially come over here and even colonized this part of the world for the sake of the tobacco. So tobacco has a long history to go back and had implications and impacts on the history more than what we can ever discuss. But coming to the discussion of cancer and tobacco. Now, tobacco has certain carcinogens that are very well known, and I will try to provide you with a list. I don't want to bore you in the middle of this talk, but I'll provide you the list of the carcinogens that are typically found in tobacco that are known factors in creating a lot of cancers. Now, how do we typically take tobacco? We take tobacco by either chewing it or as a pellet in your mouth somewhere, you keep it, or as a tobacco, as a cigarette, or a cigar. And now they have all these e-cigarettes and other things, which I have lost count of how many different ways people can get tobacco in them. But it is mostly aerodigestive way of getting it in. Now, as you can understand, once it goes through the system, it will affect each and every layer of the system, ending at the very end into the urinary bladder, where it causes a type of bladder cancer. So to summarize again, tobacco and the cancers. First of all, the mouth cancer, teeth, the dentition and the abnormalities, I don't want to discuss, that's not carcinoid or cancer related, but is health related, very important. Gum cancer, the gingival cancer, oral cancer, tongue cancer, the lining of the back of the mouth, tonsils, coming down to your food pipe cancer, coming down to the lung cancer, big time, right? And particularly the cancers associated with tobacco that are lung cancer are extremely resistant to treatment. They are difficult to control, and they're very deadly. Okay, then comes to some extent some upper abdominal, like stomach and GI tract or gastrointestinal tract cancers are also possible, but not that common. Now coming down to because from the aerodigestive tract, it gets absorbed, this carcinogens, they get absorbed into the bloodstream and then goes to kidneys, and they get they go into the urine. Now the bladder, where this urine has been sitting, is also affected by these carcinogens and can cause a type of bladder cancer as well. So from the mouth to the bladder, everything gets affected by the tobacco. So it's a huge thing that we need to be aware of. In summary, हमने अभी तक डिस्कस किया कि किस तरह से हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं. हम कैंसर के डिटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक में, हम बात कर रहे हैं कैंसर के प्रिवेंशन की.
तो हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कैंसर होने से कहीं पहले उसे रोक दिया जा सकता है अगर हम एनवायरमेंटल पॉइजन्स टॉक्सिन्स की मात्रा को कम करें अपने खाने पीने में, अपने एनवायरनमेंट में। अगर हो सके तो हमें पता है ये बात ऑलरेडी कि अगर हम पेड़ पौधे लगाएं उससे हमारा एनवायरनमेंट का जो पोल्यूशन होगा वो कम होगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हम कर सकते हैं। जितना हो सके खाना घर का खाएं, घर में बनाएं। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स, मैं कहती हूँ हमारी दादी नानी और वो सब जिस तरह से घर में खाना बनाते थे, उस तरह की अगर हम पद्धति को फिर से फॉलो करें तो हमारे फूड सप्लाई में जितने ये टॉक्सिन्स हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा लेवल तक कम हो सकते हैं। उसके बाद जो है टोबैको का इस्तेमाल, ये समझ सकती हूँ मैं कि लोग क्यों करते हैं और क्या कारण है, लेकिन इन्हीं कारणों के बारे में हमें उन्हीं लोगों को समझाना होगा, उन्हें क्लियरली बताना होगा कि ये सब इवन दो आसान तरीके हैं मुश्किलों से निकलने के लिए या जूझने के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से और उनके प्रॉब्लम से, लेकिन फिर भी हम नुकसान अपने बॉडी को पहुंचा रहे हैं और वो सही बात नहीं है। इसके अलावा और भी तरीके हैं जो हमारे नेचर में अवेलेबल हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। इसके लिए अपने आयुर्वेदिक टेक्निक्स हैं, बहुत सारे एक नॉलेज का एक भंडार है अपने पास आयुर्वेदा में जिसे कि इस्तेमाल किया जा सकता है स्ट्रेस को कम करने के लिए। उसके लिए हमें टोबैको के जैसे गंदे पदार्थ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये समझना, और ये हमारे लिए पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की जो हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के जो शास्त्र की बात करते हैं वो हमारे ही देश से, हमारे ही संस्कृति से निकल के आया है बाहर, और दुनिया भर के लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना कर सकें। उसके अलावा जो है और दो चार चीज़ें हैं जो बताना ज़रूरी है इस डिस्कशन में। उसमें से एक बात ये है कि जो कोलन कैंसर, जो कि आंत का कैंसर है, उसकी प्रिवेंशन के लिए फिर से वही बात है, अपने इंडियन स्टाइल फूड खाना खाएं जिसमें बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारा पानी और फाइबर का कॉम्बिनेशन है। जितना ये बातें तो किताबों में लिखी हुई हैं, हमारे ऑन्कोलॉजी और मेडिकल किताबों में, कि वेस्टर्न डाइट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद कोलन कैंसर, और जहाँ तक कि ईस्टर्न डाइट है वो प्रोटेक्टिव हैं। ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन के सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आप अननेसेसरी हार्मोन्स का सेवन ना करें। तो ऑफ कोर्स जब आप यंग हैं और कोई इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है तो उस समय पे जो आपके डॉक्टर्स आपको जो हार्मोन्स देते हैं वो तो लेना चाहिए। उससे कोई बहुत थोड़ा सा रिस्क हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, पर्टिकुलरली अगर आप अपने डॉक्टर के एडवाइस पे और उनके हिसाब से अगर आप ले रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेनोपॉज के आते आते पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को मिलाकर कॉम्बिनेशन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हुआ करता था, अभी भी है, उसको अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका एक डेफिनेट प्रॉब्लम इज़ ब्रेस्ट कैंसर। एंड अगर हम ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन की बात करें तो वो इस्तेमाल ना करना एक तरह से प्रिवेंशन है। अगर किसी महिला को 40 साल से पहले उम्र में ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसके डॉक्टर वो पर्टिकुलर जीन चेक कर सकते हैं। अगर वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आई तो वो उन्हें काउंसलिंग करेंगे। ये जो BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन वगैरह हैं, ये आम जनता के बारे में या उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ से। आप पूछ सकते हो मुझसे कि ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो इस समय पर जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, खाना और एक्सरसाइज, यस आई फॉरगॉट, एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपने लिए दिन में 1 घंटा खाना बनाने के लिए और आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए आपको ढूंढना ही पड़ेगा वक्त, विदाउट विच आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज़ अ यूजलेस फ्यूटाइल एफर्ट। तो दैट विल हेल्प यू इन प्रिवेंशन ऑफ मेनी कैंसर्स इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर।
उसके अलावा हम इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आपने देखा होगा मैंने किसी ब्रेस्ट लंप या मैमोग्राम या कैसे फील करना है कौन, ये सब डिस्कशन हमने नहीं किया, क्योंकि वो सब आता है स्क्रीनिंग में, वो प्रिवेंशन में नहीं आता। प्रिवेंशन का मतलब होता है कैंसर को होने से या कोई भी बीमारी को या किसी को होने से पहले रोक दिया जाए। जो हम लंप फील करने या मैमोग्राम की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं स्क्रीनिंग या अर्ली डिटेक्शन। हम उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, करते आए हैं, लेकिन जो प्रिवेंशन के लिए, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए वही बातें करनी, वही चीज़ें करनी जो हम अभी तक बताते आए हैं। अच्छी लाइफस्टाइल, अल्कोहल प्रिवेंशन, अल्कोहल पीने की कोई ज़रूरत है नहीं। वंस अगेन टोबैको की तरह ही वो भी एक कोपिंग मैकेनिज़्म है, एक गलत कोपिंग मैकेनिज़्म है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना खुद को, ना एनवायरनमेंट को, ना सोसाइटी को, ना फैमिली को। So please contact me if you have any questions. I'm always here for you. And once again, thank you Healthcare Today for giving me this opportunity, a wonderful opportunity to discuss my heartfelt, close to my heart, my passionate topic about cancer prevention and health improvement. उम्मीद है कैंसर बचाव के लिए आप काफी जागरूक हुए होंगे। द हेल्थ केयर टुडे का मुख्य मकसद कम खर्च में बेहतर इलाज मुहैया कराना है। यदि आपको कभी भी किसी इलाज या सलाह की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल। क्या आप बीमार हैं? क्या अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं कम पैसों में बेहतर इलाज? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद? तो हम हैं आपके साथ। द हेल्थ केयर टुडे। संपर्क करें 0124 44 26059 या 99 530 23767।